our outlook. Also, Q&A session will be followed by the presentation. Over to you, sir. Thank you, Mohit. I hope I am audible to everyone. Very good morning. It's been a while we are connecting back through webinar. Today we'll talk about what is happening globally, how is the implication for the Indian market, why Indian markets have underperformed, and the path going ahead, and the portfolio strategies what we are adopting. I'll just share the screen with you all. So this is Mohit. This screen is visible to you and everyone. Yes, sir, the screen is visible. Okay. So the today's topic is from volatility to opportunity, turning market noise into returns. Why did we choose this topic? Let me tell you the reason behind that. First of all, we have been meeting many clients who are already invested through our products or prospective clients. The one common feedback what I have been hearing since last 6 8 months is that market is probably going up. Market is near all-time high, or it has rather hit the all-time high and retraced back to 25,700 odd levels now. But market has gone up, but मेरे portfolio में पैसा नहीं बना है. So people who are managing money on their own or probably have invested through a variety of mutual fund products. Somehow पिछले 4 5 साल में ऐसा फीडबैक मुझे नहीं आया था मतलब ever since post COVID really started. The market was always very supportive for everyone, and everyone made lots of money. And anybody who was directly investing on their own was also having a decent return thanks to broader market buoyancy and broad base really, where the winning audience or the number of stocks outperforming the markets were very high. But since last couple of months, or rather couple of quarters, the phenomena has changed. People are complaining that the portfolio level पे पैसा नहीं बन रहा है, stocks are not moving at all, rather they have been falling down, and somehow there is a sense of little bit frustration. While this is not just with clients with whom we have interacted, but this is with many people on the street. The reasons are very simple. The winning stocks have reduced. Number of stocks outperforming the broader markets that counts has reduced. Buoyancy has gone, and very selective businesses are going up. Very selective sectors are going up. So that is the reason. Now, how have we identified? How have we dealt with this period? And how we have identified this external market noise, the tariff noise or geopolitical issues, and other things, and how we have converted into returns. We'll talk about that. This is firstly about how Indian markets have moved in last calendar year 25. So if you look at the dollar returns, so basically INR return adjusted for the rupee depreciation. So the Nifty dollar return is just 5% versus if you look at the emerging markets or the rest of the world, the returns have been pretty robust, especially Europeans and emerging market returns have been phenomenal. Obviously, there are market-centric advantages like, Brazil has a commodity advantage, or South Korea has chips and that AI infrastructure related advantage, so and so forth with China. But if you look at the MSCI emerging market itself, it has given a 31% return, which is far higher than the developed market returns. Back in India, couple of reasons. One is that the earnings have been very muted.
That is the first and foremost reason, because we need earnings for the Nifty or the broader indices to go up. That growth in the earnings has been pretty muted. We'll talk about it and see later on. Second is rupee depreciation has been one of the reason, and FIs have been selling lot stock and barrel. Though the domestic fundamentals more or less remain supportive, and also government actions and initiatives has started for the course correction. So these are the few reasons. The charts are self-explanatory for you to look at. The net FI selling has been one of the highest. That is 19 billion US dollar in calendar year 25. Usually they don't go for back-to-back selling, but CY24 was also negative a bit, and 25 is a phenomenal negative. If the earnings starts recovering well, which we think so, then the FI selling would also probably abate, and they might resume the buying as well. But the only reason what they are probably not doing is settlement of the Trump tariff, because usually my interaction with the FIs tells me that they don't prefer political policy level uncertainty, because that gives them a lot of jittery. So the moment we have a proper clean trade deal, probability is very high that their buying would resume substantially. So let's hope for the best. Now, this is another interesting data point. On 26 September 2024, market hit the top 26,200 Nifty. And why do we remember this? Because on 3rd October, we launched the ICE Growth Fund. And during the marketing campaign of the ICE Growth Fund, we were telling everyone that markets are looking pretty choppy, and hence we are going to put only 20 rupees out of 100 rupees collected into direct equity in the ICE product, and the remaining we will put into debt or liquid fund. So actually market actually corrected post that, and it went all the way till 21,800, and then it has started recovering, and right now it is 25,665. Now in between market touched all time high as well, it has reversed to this 25,665. Now, if you look at 26,216 to 25,665, Nifty absolute is down by 2 percentage points. But we have mentioned 0.7 percentage point fall because of the TRI, so total return index, including dividend. So the Nifty 50 is basically flat during this 15-month time period. Mid-cap index is negative 1.2%. BSE 500 TRI, which is our benchmark, is down by 2.6 percentage. And the small cap is major pain point, down by 9.6 percentage. During this period, our four products are there. So business cycle fund is outperforming the benchmark with slightly sluggish 0.4% up move. So basically flattish but positive side. Diversified fund has relatively done well. It is 2.8% positive. ICE growth is obviously doing good. It is 4.3, and the surprise package, and which probably we were very confident to, and we communicated to our clients that this fund will perform much better, and it has bounced back to 4.5%. So now, if you look at the returns versus broader market pain, we have navigated it quite comfortably. In the case of all weather and ice and even diversified, we have generated anywhere between 7 to 5 to 7% excess return or alpha in our language compared to the market during this choppy 15-month period. Uh, Another data point is that on 7th April 2025, market actually bottomed out and made an intraday low of 21,800 around, and closed at 22,161. If you all remember, we did not only webinar, but we also conducted a physical sessions and communicated to all our clients that this is the level you should definitely go long. And we were very, very confident that market should turn around. Actually, if you look at that, Nifty has given a 17% TRI returns. BSE 500 TRI returns are also 17.3%. All weather has done almost close to 22%. Diversified is close to 20%. ICE is close to 17.6%.
So all of our product except business cycle have outperformed the market even from the bottom cycle recovery. Business cycle is slightly sluggish because of its own nature. The fund itself is quite different in style. So we'll talk about it as and when we go towards that. So basically, all our products have done well during this 15 months choppy period as well as during the recovery period. Now, if you look at this period of 7th April 2025 to 14 January 2026, which is as recent as this month, Nifty BSE 500 TRI is 17.3% return, which is very good return. But if you look at the constituents, the 30% stocks, that is 152 stocks, have generated a negative return, absolute negative return. So it has not happened very recently in the past. So this is where I was just telling you in the beginning that the breadth of the market is turning negative, and strength is reducing, and buoyancy is going away, and only selective audience is winning. Now, within the positive constituents, if you look at, only 42% of the constituents have outperformed the BSE 500. So again, that's a very small number. So majority of the market has underperformed the market returns. And within so basically winning audience has started shrinking and the process has only intensified. Now, if you look at the global market, you know how we have navigated. We were very sure that dollar is likely to depreciate, and that if you look at the dollar index, it has corrected and has been correcting because of various reasons. One of the reason is increasing debt levels and very high uncertainty is emerging because of adverse geopolitical scenario. And emerging markets, usually if the dollar index falls, the emerging market rises and hard commodity assets perform very well. And we could anticipate this thing pretty early. If you look at the currencies, most of the currencies globally have appreciated against US dollar except INR because of our own issues. So, be it GBP or Euro, they have all appreciated. Even majority of the emerging market currencies have appreciated against US dollar. During the period, precious metals have had a phenomenal bull run, be it your gold or silver. Um, Even the base metals like copper and aluminum or zinc have done very, very well during this time period. Now, which are the reasons? One of the reason I mentioned was obviously that the US dollar weakness, and people have started shifting their allocation away from dollar to, let's say, gold, silver, and other hard assets, including emerging market equities. Now, historically, demand for any commodity. Another interesting point why I'm clubbing China along with US, you have to understand this very carefully. If you look at the first bracket, historically what used to happen, जब भी globally कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता था ना, तो चाइना यूज टू स्टेप अप द सप्लाई. ओवरनाइट वो मेहनत करके अपना सप्लाई स्टेप अप करता था. उसका रीजन बड़ा सिंपल था. उसकी इकोनॉमी तब फास्ट ग्रोइंग थी, उसके पॉपुलेशन तब यंग था. दिस आई एम टॉकिंग बिटवीन 2000 टू 2018, 19, 20 और 20 एज रिसेंट एज 22. सो यंग पॉपुलेशन को एक वो एब्जॉर्ब जॉब में एब्जॉर्ब करने के लिए, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एंड टू कैप्चर द मार्केट शेयर फ्रॉम द हाई कॉस्ट सेंटर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना यूज टू इमीडिएटली इंक्रीज द कैपेसिटीज. एंड अगेन जो भी प्राइस कॉमोडिटी का बढ़ता था, चाइना यूज टू सप्रेस इट. तो आपने देखा होगा कि फॉर मेनी मेनी ईयर्स मेनी कॉमोडिटी प्राइसेस डिड नॉट गो अप एट ऑल. आफ्टर लेमन ब्रदर क्राइसिस तो बिल्कुल भी नहीं. एंड उसका रीजन ये था कि चाइना जब भी थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता था डिमांड की वजह से, तो चाइना सप्लाई ज्यादा बढ़ा देता था. बट और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स की बात करें तो यूएस में एक जमाने में 23 एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हुआ करते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज पॉलिसी इट हैज नाउ रिड्यूस टू जस्ट 4. कैन यू इमेजिन? सो दिस is now totally that approach of China is now getting reversed. Firstly, वहां पे अभी फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का नहीं है, बिकॉज एनीवेज देयर मीडियन एज इज 40. वहां पे फोकस है वेज इंक्रीज का, वहां पे फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी का, वहां पे फोकस है बेटर प्राइस रियलाइजेशन का.
और एनीवेज जो कंपटीशन पहले था वो टोटली मार्केट शेयर चाइना के पास चला गया है और कंपटीशन वाइप आउट है, जैसे मैंने यूएस में बताया कि 23 से 4 स्मेल्टर हो गए. So this is the reason, and of lately we have seen this phenomena that China has not rather increased the supply despite of the increase in commodity prices. On the contrary, they have started controlling the supply. And these are global trends. You have to, my friends, you have to pay a lot of attention to these global trends. It is not for a 6 month or 3 month. The policy changes are for years and sometimes for decade. So there is a very high probability that the sustenance of the high commodity prices are going to stay here. Moreover, there is increasing adoption of AI, electric vehicles, solar, and whatnot, which is driving the demand for most of these hard metals. Now, if you look at the US, now come to the next bracket at the bottom. Earlier, US corporates used to be very cash rich corporate. They are still, but the cash generation was far, far higher than the cash requirement, that is capital expenditure. And how they used to reward to the shareholders simply by way of giving a very high dividends and very, very, very strong buybacks. And that buybacks led to improving ROEs for the US companies for years and years. However, there is a change in this phenomena. This is again a long policy change, a long fundamental change, and it will have a long lasting effect for years to come. And that phenomena is different now. Now the capex intensity has increased substantially, especially because of the AI, which is likely to result in lower dividend payouts and lesser buybacks and more debts. We'll talk about it later on. And this is not just with AI. If you look at the recent Trump announcements for the defense, they've decided to ramp up the defense budget, and that number is huge, $1.5 trillion. And if they are going to ramp up the defense budget, obviously the competitor or geopolitical competitor, I would say, would not keep quiet. They will also be forced to ramp up the defense budget, which in turn would require hard assets, like silver, copper, zinc, aluminum, whatnot, and a rare earth material as well. At the same time, US President Trump has said that the defense companies will be restricted to give high dividends, as well as they will be restricted to give announce a high buybacks. सो बेसिकली जो यूएस का यूएसपी था कि भाई एक्सेसिव कैश जनरेट करते हैं उसको इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं, आइदर बायबैक्स और डिविडेंड, वो एक तो एआई की वजह से रिड्यूस हो रहा है, एंड दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली उसको डिक्टेट कर रहा है कि आपको कैसे भी कर पे कैपेक्स बढ़ाना है, उसके लिए आपको डिविडेंड काटना है या तो बायबैक काटना है. So these things are more or less very, very conducive for emerging market as well as commodities in a coming years. Now, one of the evident factor is silver. Since it has gone up a lot, many people own it in our circle. We strongly pushed it to our clients. We also own it in one of the product. Now, if you look at this is the deficit number. So the red is the positive deficit, and so basically, red is a surplus number and the blue is a deficit number. So earlier, silver production was higher than supply. Of late, since last 5 years, the production is lesser than the supply. Sorry, production is lesser than the demand, and basically demand has grown much faster because of the variety of reasons, including EVs and solars and electronics and AI capex and whatnot. Also, silver is byproduct. 70% of the silver is extracted as a byproduct while making either zinc or lead or any other material. And only 30% silver is produced from the original mine. So it is not like that कि अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो प्राइस इलास्टिसिटी की वजह से आपका सप्लाई भी बढ़ता है, बिकॉज ओनली 30% माइनिंग कैपेसिटी कैन बी रैम्प्ड अप, बट द बाई प्रोडक्ट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि अगर मुझे बाई प्रोडक्ट में सिल्वर ज्यादा निकालना है तो मुझे लीड और जिंक भी ज्यादा निकालना पड़ेगा, विच मे नॉट बी वायबल. सो that's why the supply is probably not increasing as fast as demand. Now,
another thing which I talked about AI, the capex and all. What exactly is happening and how we are capitalizing it in an Indian market context? Now, if you look at the capex of the all these technological firms, their capex number has increased by 46% in 2024, and together in last couple of years, they have spent more than the entire Apollo program. तो बहुत ज्यादा स्केल पे अभी कैपेक्स हो रहा है. इनफैक्ट इन द नेक्स्ट 3 years एवरी ईयर प्रॉब्ली $300 billion कैपेक्स इज प्लान. So in next 3 years, they are going to spend $1 trillion capex for AI. Now, this number looks pretty huge and it has a huge impact on the US economy. So direct AI investment may be just 1% of the GDP, but the total AI investment, so basically ancillaries supporting with the AI, is as high as 5% of the GDP. एंड द उसका जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन जो है ना वो 40% है. मतलब एआई कैपेक्स इज ड्राइविंग इंक्रीमेंटली 40% ऑफ द यूएस ग्रोथ. दैट्स अ ह्यूज नंबर. एंड द वेल्थ इफेक्ट इज मोर देन 80% बिकॉज वेल्थ इज जनरेटेड थ्रू various options including stock markets powered by the AI. So these top 10, 15 stocks wealth creation has been phenomenal. So entire US economy is too sensitive now with the contribution of AI in its growth. Now, if you look at the AI deals, हम बहुत सुनते हैं कि इसने एनवीडिया में पैसा डाला, एनवीडिया ने ओपन एआई में डाला. तो मतलब अल्टीमेटली क्या है ना, इतना ज्यादा कैपेक्स है, बट वो जेन्यून है या एक दूसरे का पैसा रोटेट हो रहा है. तो उसके हमने इससे तो बहुत सारे डेटा मिलेंगे, पर हमने आपको एग्जांपल के लिए 3 डेटा रखे स्क्रीन पे. नाउ इफ यू लुक एट द सेंटर वन, एनवीडिया ने $100 billion का इन्वेस्टमेंट किया ओपन एआई में, राइट. ओपन एआई ने एनवीडिया से चिप्स खरीदने का नक्की किया. साथ साथ में ओपन एआई ने $38 billion का अमेजोन से डील किया फॉर द यूज ऑफ अमेजोन क्लाउड इंफ्रा. अमेजोन ने $50 billion का इन्वेस्टमेंट में वापस एनवीडिया में किया फॉर वॉट एवर रीजन. सो बेसिकली पैसा इधर से इधर गया, इधर से वापस घूम के एनवीडिया में आया. The same is with the bottom example between OpenAI and Microsoft. So the capex is, though it is genuine, but it is so interlinked. There is a lot of circular deals. So the genuine capex number is yet to be seen. अभी दूसरा क्या हो रहा है, अगर जो कैपेक्स भी कर रहे हैं तो हैवी कैपेक्स हो रहा है, तो दे ऑल आर डूइंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करते हैं. एसपीवी बोलते हैं हम, जो आपके सामने स्क्रीन पे है सेंटर में. तो एसपीवी है वो क्योंकि ये जो जीपीयू है, जो यूनिट्स है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. उनकी कॉस्ट हाई है, डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है और शेल्फ लाइफ भी कम होती है. तो वो बैलेंस शीट को बिगाड़ देते हैं. तो दे ऑल हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, आई वुड से, कि अगर मैं एनवीडिया हूं तो मैं, या फिर मैं एएमडी हूं, या फिर मैं एआई यूजर हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एसपीवी क्रिएट करता हूं. और वो एसपीवी मैं बाहर से डेट और इक्विटी का फंडिंग लाऊंगा. फिर वो एसपीवी कैपेक्स करेगा, और एसपीवी कैपेक्स करके डेटा सेंटर खड़ा करेगा, और फिर उसको लीज और टेनेंट पे हाइपर स्केलर्स जो है वो एआई यूजर से वो ले लेंगे. सो बेसिकली ये पूरा जो साइकिल है वो बर्डन जा रहा है एसपीवी पे. अभी एसपीवी पे अभी कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं आ रहा है. इवेंचुअली क्या है ना, कि आप ही ने एक एसपीवी किया है जो लिस्टेड कंपनी में इम्पैक्ट नहीं होता है, एक सेपरेट सेटअप किया है जिसमें डेट इक्विटी का फंडिंग मिल रहा है. वो एसपीवी बड़ा कैपेक्स कर रहा है. कैपेक्स करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वो जो भी पेरेंट कंपनी है उसको, हाइपर स्केलर को, वो एज अ टेनेंट वो टेनेंसी पे रेंट पे दे देता है. सो दिस इज लाइक in a way good, but structurally risky, because ultimately too high capex, too fast capex is happening. अभी इसका क्लासिक एग्जांपल है एक्स एआई का जो 20 बिलियन जीपीयू का एसपीवी फाइनेंसिंग अभी डील हुआ. सो $20 बिलियन का डील हुआ, उसमें डेट इक्विटी का फंडिंग आया. उसमें एनवीडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है $2 बिलियन का, और उसने वो एसपीवी क्रिएट किया जो अल्टीमेटली वो एक्स एआई, जो एलोन मस्क की जो एआई फर्म है, उसको 5 साल के लिए लीज पे दे रहा है. सो
I don't know where and how it is going to behave and act, but if you look at the number on the left hand side, ये जो येलो लाइन है वो फ्री कैश फ्लो का लाइन है जो स्टेटिक हो गया है, और कैपेक्स नंबर है वो सब्सटेंशियली बढ़ रहा है, कैपेक्स टू रेवेन्यू नंबर है वो सब्सटेंशियली बढ़ रहा है। एंड राइट साइड में जो लोन है एआई फर्म्स की, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और बहुत फास्ट बढ़ रही है। इनफैक्ट पिछले 3 साल में उसका ग्राफ बहुत ही ऊपर गया है, शार्प ऊपर गया है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली कैपेक्स सबको ही कर रहे हैं, बट रेवेन्यू अभी आई नहीं है। ऑब्वियसली वो डिलेड इफेक्ट से आएगी। अभी काफी चीजें फ्री भी है, पेड भी नहीं है। सो इन टोटल इफ यू लुक एट the AI spending done by this couple of players is $332 billion, versus that the revenue is just $28.7 billion. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द हिडन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। दूसरा, कॉस्ट स्ट्रक्चर इज अहेड ऑफ द रेवेन्यू, and that's why the risk is high and majority of the growth. um, uh, so basically AI is becoming the primary growth engine in major economy, that is USA. So the concentration risk is very very high. So if demand disappoints or there is excessive assets, in that case ultimately uska repurpose hoga और write downs होगा। So this is the risk. But what we are capturing is that because of the AI, there is a huge need for hard assets like commodities. Because of the dollar depreciation, there is a huge need for hard assets, that is commodities. Also because of different positioning of China now, that no, I don't want to cut the supply anymore. Rather, I want to demand the better realization and improve the wages and salary, and continue to slice out the and extract the juice because competition is anyways out of the system. So इंडिया के कंटेक्स में ये बहुत अच्छा है, इमर्जिंग मार्केट के कंटेक्स में बहुत अच्छा है। एंड you know that if the Chinese mindset has changed, then probably जो इंडिया के कुछ प्लेयर्स जो बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्राइस डिक्टेट की वजह से सफर कर रहे थे, दे विल बी डूइंग सब्सटेंशियली बेटर इन द कमिंग ईयर्स। नाउ बैक होम, जैसे ये ग्लोबल फैक्टर्स तो मैंने बताया। बैक होम द मेजर अनदर अपॉर्चुनिटी इज कंजम्पशन। आई हैव बीन टेलिंग इट फॉर अ while. It has played partially but not reflecting in the stock prices. But the policy making and things are pretty much clear that कि यहाँ से consumption consistently अच्छा ही करना चाहिए as a basket। अपनी जीडीपी की साइज सब्सटेंशियली, अगर 9.7% CAGR इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट मैं तो बोलता हूँ 7% 8% CAGR से भी अपना जीडीपी ग्रोथ आता है, तो अपना पर कैपिटा इनकम 12-13 लाख रुपीस पर एनम पहुंच जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर फ्रॉम करंट 1.8 लाख। उसका रीजन ये है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा मीडियन एज जस्ट 29 है। और इंडिया विल बी एडिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्लोबल वर्किंग एज पॉपुलेशन by 2045. As you can rightly see, the China is going to witness a negative growth or reduction in the working age population. हमारा मिडिल क्लास का काउंट भी बढ़ रहा है, ये सब डेटा मैंने आगे भी शेयर किया हुआ था। हमारे यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है। सो अल्टीमेटली इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो सब्सटेंशियली बढ़ेगी। अभी उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। इंडिया के अंदर एक इंडिया वन है, जैसे हाई इनकम कंट्री विद इन द कंट्री। तो काफी लोग इंडिया में जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक का जो स्टेटिस्टिक्स है कि 14,000 $15,000 पर कैपिटा इनकम पे आप क्रॉस करते हो एज अ कंट्री, तो आप डेवलप कंट्री में आते हो। तो इंडिया में तकरीबन 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वो 14-15 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम से ऊपर है एन्युअली। एंड अगर वो 14 करोड़ लोगों का ही देश बना होता या तो हम 63rd लार्जेस्ट वर्ल्ड में होते इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम रैंकिंग। जो 15 हज़ार डॉलर का वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसमें 14 करोड़ लोग अभी इंडिया में ऑन एन एवरेज क्वालिफाई कर रहे हैं। एंड सिर्फ 14 करोड़ लोगों का देश होता तो इंडिया वुड हैव बीन 63rd इन द रैंक इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्लोबली। सो अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं डेटा आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी पर कैपिटा इनकम 2500-3000 डॉलर को क्रॉस करके ऊपर जाता है ना,
वो 7 8 9 हज़ार डॉलर तक काफी 45 डिग्री के ग्राफ से ऊपर जाता है। तो एक्सेप्ट चाइना, इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो जब भी उनकी पर कैपिटा इनकम वो थ्रेशोल्ड लेवल हॉकी स्टिक कर्व या जे कर्व को क्रॉस करके ऊपर गया, चाहे वो इंडोनेशिया का पीरियड था या तो फिर ब्राजील का था या तो फिर वियतनाम का था ड्यूरिंग दैट पीरियड, और मेक्सिको था ड्यूरिंग दैट पीरियड, उनके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बहुत ही फिनोमिनल आए हैं। सो बेसिकली आप बात करें मेक्सिको की, 1991 से 1998 का जो पीरियड था, वहां पे उनका इंडेक्स जो रिटर्न्स देके गया है वो 5 साल का 18 19% का रिटर्न था, और 7 इयर्स का 15 16% का रिटर्न था। द ब्राजील रिटर्न वर फिनोमिनल, सो एज इंडोनेशिया एंड वियतनाम। सो बेसिकली जहां जहां पे भी ये पर कैपिटा इनकम ऊपर जाता है, वहां वहां के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स वो पीरियड में सब्सटेंशियली बढ़ते हैं। और राइजिंग पर कैपिटा इनकम से डिमांड बढ़ती है, एक स्केल आता है, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है, और जो स्केल आता है उससे आपका ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी आती है, नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, उससे और या तो एक्सपोर्ट्स होता है या जॉब्स क्रिएट होती है, और फॉर और कंजम्पशन होता है। जो जो सर्कल है ना, वो अभी सेल्फ सस्टेनिंग सर्कल बन गया है अभी। अभी एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बेनिफिट है ना हमारा, लो इनकम से मिड इनकम और हाई इनकम में ट्रांजिशन का, पर कैपिटा इनकम वाइज, और यंग पॉपुलेशन जो ऐड अभी कंट्री में है, और वो जो बूम पीरियड हम बोलते हैं ना, वो बाकी कंट्रीज में जो लंबा चला, वो प्रोबेबली इंडिया में इतना लंबा नहीं चलेगा। अभी मैं आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बताता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास जो डेटा है टेबल पे, वो है कि अगर डिफरेंट सिनारियोज हैं कि हमारा जीडीपी अगर 10% सीएजीआर से ग्रो करेगा बिटवीन 23 to 47, तो हम $35 ट्रिलियन की जीडीपी बनेंगे, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो रफली $20,800 पर कैपिटा इनकम होगा, जो अभी रफली $2,800 है। सिमिलरली अगर हम नीचे नीचे आते हैं और 6% सीएजीआर से ग्रो करते हैं, तो हमारा जीडीपी $16 ट्रिलियन का होगा इंस्टेड ऑफ 35, एंड हमारा पर कैपिटा इनकम 9.6 थाउजेंड डॉलर पर कैपिटा इनकम पर ईयर होगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस, इट्स नॉट दैट बैड, 6% इज ऑल्सो नॉट दैट बैड। मेरे हिसाब से हम बिटवीन 6 to 8% के बीच में रहेंगे। सो हमारी जीडीपी की साइज बिटवीन 16 to 23 ट्रिलियन डॉलर होगी, और पर कैपिटा इनकम बिटवीन 9 to 14 थाउजेंड डॉलर पर कैपिटा इनकम होगा। अभी राइट साइड में आप देखिए, चाइना का जो बूम पीरियड था ना, जहां पे मतलब उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी बढ़ी बढ़ी, और एक लेवल के बाद वो पीक आउट होके स्ट्रगल कर रही है। तो अभी वो $13,500 पे पर कैपिटा इनकम है चाइना की, बट वो 11 से $13,500 में बहुत टाइम पास किया उसने, काफी टाइम निकाला। सो चाइना का मेजर बूम पीरियड था 1980 से 2010, जहां पे उसकी जीडीपी ग्रोथ 10.1% सीएजीआर से बढ़ी। साउथ कोरिया का 1965 से 1995, 30 साल का पीरियड था जिसमें 9.8% सीएजीआर से उसका जीडीपी बढ़ा। सेम वॉज फॉर लेट्स से सिंगापुर, कतार, सऊदी अरेबिया। देन देर वर फ्यू कंट्रीज जिसका वो बूम पीरियड थोड़ा सा कम था, या तो फिर ग्रोथ रेट कम था, जैसे जापान 7% का सीएजीआर था बिटवीन 1960 to 80। ब्राजील 1960 to 80 में 7.4% का सीएजीआर था। धीरे 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 दूसरे कंट्रीज का बात करें तो वो ग्रोथ रेट कम होता गया है। अभी इंडिया में 20 साल मिलेगा, 30 साल मिलेगा, जैसे चाइना में 1980 से 2010, तो उसको प्रैक्टिकली 30 साल मिले। साउथ कोरिया को 30 साल मिले। मलेशिया को भी 20 इयर्स मिले। हमको कितने मिलेंगे? मेरे को लगता है हमारा जो जो पीरियड है ना, वो कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है। सो बेसिकली आपकी पॉपुलेशन जो आज यंग है, वो धीरे धीरे करके एज हो जाएगी। तो इनफैक्ट बाय 2050 हर 5 में से एक इंडियन सीनियर सिटीजन होगा, विच विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट नेगेटिवली। सो हमारा जो ये जो एडवांटेज है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो पहले बहुत कम था, वो अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमारा जो जो बूम पीरियड है वो प्रोबेबली इतना 30 इयर्स का नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट लाइक दिस। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर वो 30 इयर्स या 40 इयर्स का नहीं हो सकता है, और वो सिर्फ 20 साल या 25 साल का रहेगा, तो सामने मार्केट का डिस्काउंटिंग 15 साल में हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 15 इयर्स आर गोइंग टू बी फार बेटर फ्रॉम द मैक्रो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि पर कैपिटा इनकम हमारा 14 15 हज़ार डॉलर पे जाके रुक जाएगा।
उसके बाद या तो हमको इनोवेशन पे फोकस सब्सटेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन का जो एडवांटेज है वो अभी डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होगा। यू विल बी ग्रेजुअली एजिंग कंट्री, आपकी एनीवेज फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो आपको या तो पॉलिसी फ्रेमवर्क इंप्रूव करके आर एंड डी पे और इनोवेशन पे काम करके जाना पड़ेगा, जो राइट नाउ चाइना और काफी डेवलप वर्ल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। Till then, enjoy the journey. If you look at the opportunity size, it's pretty huge. I mean, from every angle, इंडिया में अभी ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आता है, चाहे वो होटल रूम्स की अवेलेबिलिटी हो, हॉस्पिटल बेड्स हो, एयर पैसेंजर ट्रैफिक हो, QSR आउटलेट्स हो, कार्स हो, ड्यूरेबल पेनिट्रेशन, मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन हो, सुपरमार्केट स्टोर्स हो. So, all these things are clearly indicating that there is a huge scope for growth. उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लेना चालू किया है. फर्स्टली दे हैव इंक्रीज द इनकम टैक्स लिमिट टू 12.5 लाख रुपीज, टिल देन नो टैक्स. उसका रफली 1 लाख करोड़ का बेनिफिट जो सिस्टम दिखा रही है, दैट इट विल बी फेल्ट इन द इकोनॉमी. जीएसटी रैशनलाइजेशन जो किया है उसका भी 1 लाख करोड़ का बेनिफिट आएगा. 8 पे कमीशन which is likely to come will have at least 1.5 लाख रुपीज बेनिफिट. इंटरेस्ट रेट्स जो कंसिस्टेंटली नीचे है उसका भी अराउंड 0.5 लाख करोड़ का बेनिफिट है. And the bank deregulation and liquidity infusion, so OMO करके. So basically all these benefits are likely to percolate into the growth. And if you look at the Nifty 50 EPS growth quarterly or on PAT growth quarterly, it is reasonably muted for the ever since June 24. So before that the growth was pretty strong. Like June 23 16%, September 23 20%, and likewise. But June onwards, the growth has reduced to 7%, 7%, 6%, 6%, 10%, 6%, and 8%. My sense is that this number is likely to hit the double digit, and rather it would go up in the coming 4 to 5 quarters. So, driven by the factors I mentioned. And we are looking at a very conservative 1280 rupees Nifty 50 EPS. If you apply 18 times, it will give you a Nifty levels of 23,000. And if you apply 22 times, it will give you a Nifty level of 28,000. यूजुअली हमारी ये रेंज मार्केट सस्टेनेबली कभी ब्रेक करता नहीं है, नीचे में ना ही ऊपर में. सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स, to be very honest, 23,000 is a lower level I have mentioned, but I don't look at कि वो नंबर आएगा, क्योंकि अभी अभी मार्च एंड के बाद फर्स्ट क्वार्टर जैसे ही जून का खत्म होगा, मार्केट विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग 28 का अर्निंग्स. जो FY27 का हमने 1280 लिखा, वो 28 का अर्निंग्स को डिस्काउंटिंग चालू करेगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे 25,000 के नीचे निफ्टी जाए ऐसा लगता नहीं है. वी आर एट 25,600 ऑड लेवल्स. ऊपर में ऑब्वियसली जाने के लिए 25,000 के नीचे जा सकता है, बट इट विल नॉट सस्टेन. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. एंड ऊपर में 28,000 से 29,000 का एक रेंज मुझे मार्केट्स का दिख रहा है, बेस्ड अपॉन प्योरली दिस नंबर्स कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स. बाय जून एंड और सितंबर ऑफ maybe another 6-7 months down the line, market will strongly start discounting FY28 earnings. तो फिर और ऊपर के लेवल खुल सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ. Now let's look at the funds, how they have performed. The all weather has got this is the mixture of large cap, small cap, and mid cap as of now. Now, if you look at the current financial year, we have tried to put it in quarter wise. How was the Q1, how was Q2, Q3, and current financial year till date. So the Q1 was slightly muted versus market. Market was 10.77. Our fund was 9.84. Q2 was very, very good for us. We remained positive 0.85 and market was negative 3.23. Q3 is again good, 7.5 roundabout, and market was 5. So the current financial year till 31st December 2025, जो मैंने आगे आपको रिटर्न्स दिखाए थे टिल 14 जनवरी था कंपैरिजन करने के लिए. सो उसका नंबर ज्यादा था, 21 21.5%.
But till 31st January, sorry, 31st December 2025, we are close to 19.6 percentage versus market 12.57. So this year has been pretty strong for the fund. Now this is since inception, year-wise detail, financial year-wise. We just started in 21-22. So it was a portfolio construction time. 22-23, the fund outperformed. 24, fund again smartly outperformed. 25, we underperformed because we articulated in the past at the time of election, national election, we became extremely cautious. We went on for a defensive bets, and the market actually moved very fast during this 1.5 2 months, and the underperformance just kicked in, and which impacted the performance in last financial year, that is 24-25. However, 25-26 is a total recovery, and hence since inception the fund has generated alpha over benchmark, and these all returns are net of fees and charges. So, and we are very hopeful that the product should continue to do very well. Now the second is diversified fund, our another flagship product. The mixed, the large, mid, small cap, and the cash levels are there for you to look at. All our products are flexi cap with a different thought process. So diversified would not have exposure to precious metals like all weather would have, which you all know. So the Q1 was again slightly muted for the fund. Q2 much better. Q3 again at par. So current financial year till date, as on 31st December, the benchmark is 12.57 and fund is 17.5 percentage. Now, if you look at the since inception number, it's a star performing fund. 21-22 was flat, 23 was much better, 24 was again much better. 25, as I said, impacted the performance for diversified as well, along with all weather. 26 is going very well till date. And since inception, the fund is almost in 4% excess return over benchmark on a CAGR basis, which is a strong outperformance. Now, business cycle fund. This fund has a peculiar nature of taking exposure against the market wind and slightly be ahead of time. Since the markets have been pretty choppy for the last 15 months, and the earnings are taking time to revive, couple of bets are yet to perform well. And as a result of that, the fund has relatively underperformed compared to diversified and all weather. So if you look at Q1, it was actually doing much better. The fund delivered a better return than market. Q2 was also pretty strong, better return than market. Q3 has been underperformance, and as a result of that, the current financial year fund is slightly lesser than the market returns. But this is the nature of the fund. It would also revive very swiftly as and when the time comes. In 23-24 November, we launched the product. So it was very just 4 month for the portfolio construction. So you have to actually ignore that 23-24 number. 24-25 fund did very well. Market 6.65% and fund was 10.6. Current financial year is slightly lesser than the benchmark, and since inception, it is almost half a percentage or 40 bips higher than the market returns, which has all ingredients in place to recover and do well as and when the selective sectors in the stocks pick up. And nevertheless, it has still performed much better, and it has beaten up the markets. Now, ICE is a thematic one with relatively less churning, and focus is on consumption, exports, and investments. This is the bifurcation of the large, small, mid. Now, when we launched the product, we told our investor that 20 rupees you put in ICE and 80 rupees you put in Wealth Preserve, which is a liquid fund. But a couple of clients still wanted to go directly, and they said that, okay, we don't want to time the market. And so these are the returns for pure ICE investor who never went for a debt investment at all. The Q1 was far better. Q2 was also decent.
Q3 is slightly lesser, and hence current financial year till date, the fund is smartly up 16.64 versus 12.57 for the market. Since inception, because the fund got launched at the top of the markets are negative 0.61 and fund is almost 5% positive. So it's a significant 5.5% alpha since inception, but only for those who only invested directly into the fund and did not put into liquid product. Now, if you look at majority of the audience or majority of the clients who listen to us, and they said that okay, we will go ahead with your theory of 80 rupees into wealth preserve liquid, and gradually as and when market falls, you will have to invest. So for them, if you look at the since inception number, it's a phenomenal 11.5% positive return versus market return of 0.61. So that's where the difference has come. We actually saved money, not only saved money, we created wealth for our clients during the most difficult patch of the market. Uh, so yeah, that's all. I'll just stop here, and I'll open up the floor for Q&A. Please feel free to ask me. I will try my best to answer candidly. Okay. First question I can read, and it's a very nicely written. Postmortem of the past records, not much interesting. Hopefully, please explain upcoming years, market outlook, and forecasting. So I think the typing was done much ahead of my presentation got complete. So मैंने आंसर तो किया है मेरे प्रेजेंटेशन में दैट मुझे आउटलुक मार्केट का क्या लग रहा है एंड अपकमिंग ईयर्स में मेरा क्या व्यू है. So I think that answers your question now. Uh, रीजन फॉर लोअर रिटर्न इन Q3. सो कई बार क्या होता है ना, इट इज एवरी, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं बट जनरली एवरी क्वार्टर में यू मे नॉट परफॉर्म. यू हैव टू लुक एट 3 to 5 years एज अ होराइजन. एक आधा साल भी ऐसा जाता है बट एक आध क्वार्टर तो नेचुरली जा सकता है, क्योंकि अगर आपके कुछ विनर्स है वो परफॉर्म कर चुके हैं और वो अभी पोज ले रहे हैं और नए विनर्स आपके अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए और मार्केट में कुछ और मूवमेंट हो गया है, तो आपका अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है. दूसरा, आपका पोर्टफोलियो में लार्ज मिड स्मॉल ऑलमोस्ट है और मार्केट सिर्फ लार्ज कैप में ज़्यादा बिहेव करता है और मिड एंड स्मॉल कैप में पेन ज़्यादा आता है तो भी इम्पैक्ट आता है. So, nevertheless, we have tried our best. Despite of owning mid and small cap, our returns are beating the large caps, mid cap, and small cap indices. So, this is phenomenal. But yes, 1 quarter or 2 quarter or even a year, 1 year up and down is possible. The only triggering point for you is that there should not be sustainable underperformance, and that's where the question should be raised, which is not the case as of now with any of our products. Any view on zinc and copper? So we are structurally bullish on hard assets and commodities. We feel that the revival in the mindset of the China, that China is now more keen towards profitability, more keen towards you know capturing the juice, extracting the better juice, and anyways, competition is out. And also, de-dollarization theme, which has picked up, is likely to benefit not only hard assets and commodities but also emerging market. What do you think about Trump effect in future? सी देखिए सर, इंडिया के कंटेक्स में तो ऑलरेडी उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आवर कम्पिटिटिव कंट्रीज. तो काफ़ी इंडस्ट्रीज में उसका हिट है. जैसे आपका सर्टेन गारमेंट्स में या जेम्स एंड ज्वेलरी में, सर्टेन इंजीनियरिंग गुड्स में भी इम्पेक्ट है. लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ड्रिवन बाय द एक्सपोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट्स आर जस्ट
2.5% of the GDP, not more than that. And also US exports are 17-18% of the total export number. उसमें भी उन्होंने सर्विसेज को एक्सक्लूड करके रखा है, उसमें भी उन्होंने फार्मास्यूटिकल को एक्सक्लूड करके रखा है, सर्टेन केमिकल को एक्सक्लूड करके रखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करके रखा है। तो एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो नेगेटिव इंडिया में ब्रॉडर स्केल पे नहीं है, बट इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो उससे काफी लिंक्ड है। तो अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है और रेदर टैरिफ्स और बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो एक बार के लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बट मेरे हिसाब से इंडिया इज पैरेलली वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे यूरोप के साथ बहुत फाइनल स्केल पे ऐसा बात चल रहा है। वी डिड विथ यूके, वी डिड विथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो एंड सो फोर्थ। सो मेरे हिसाब से इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट वेल। साथवी में मुझे एक पॉजिटिव क्या लग रहा है कि ट्रम्प इफेक्ट हमारे यहाँ एक तो ऐसे डायरेक्ट तो कुछ ज़्यादा है नहीं बिकॉज एक्सपोर्ट नंबर कम है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट है, और दूसरा पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशर में आती है जब ट्रम्प के साइड से ऐसा कुछ होता है, तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हमको अच्छे देखने को मिले हैं जो अदरवाइज इजीली नहीं आते थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं आते थे, बट इजीली नहीं आते थे। सो आई एम वेरी होपफुल इन दिस बजट दैट द गवर्नमेंट विल एक्चुअली ट्राई टू फर्दर पुश द डोमेस्टिक ग्रोथ रेट एंड द लोकल स्ट्रेंथ, एंड also try to push exports via non-US routes with rest of the world. सो आई थिंक एडवर्सरी और एडवर्सिटी में ही अपॉर्चुनिटी होती है, और मैं इसको काफी पॉजिटिवली देख रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट द आंसर इज टू यू सर। एनी व्यू ऑन रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी ट्रांसमिशन? देखो, रिन्यूएबल्स में अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक्सेस कैपेसिटी का एंड इंक्रीमेंटली हाई इनपुट कॉस्ट का। और जो वैल्यू चेन है उसमें गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर मोर एंड मोर डोमेस्टिक वैल्यू चेन, विच इज गोइंग टू टेक सम टाइम। सो मेरे हिसाब से जो ऊपर के लेवल से जो रिन्यूएबल स्टॉक्स में जो मंदी आई है और प्राइसेस जो नीचे गिरे हैं, वो थोड़ा और टाइम रहेगा टिल द टाइम नंबर स्टार्ट्स किकिंग इन बैक। और एनर्जी ट्रांसमिशन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है। इंडिया की पावर रिक्वायरमेंट कंसिडरेबली बढ़ने वाली है और बढ़ रही है, और ऑब्वियसली उसका बेनिफिट एनर्जी ट्रांसमिशन बिजनेस को आएगा। तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। नियर टर्म अलोंग विद रिन्यूएबल्स उसमें भी थोड़ी चैलेंजेस है, बट मुझे नहीं लगता है कि ट्रांसमिशन बिजनेस में इतना रिस्क है जितना रिन्यूएबल्स में अभी है। इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस वॉलेटाइल मार्केट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर? मेरे हिसाब से 25 600 700 का निफ्टी है। मैंने बताया आपको कि मुझे नहीं लगता है कि सस्टेनेबली 25,000 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी 28, 28.5, 29,000 की निफ्टी आ सकती है। मेरे हिसाब से न्यू इन्वेस्टर्स को भी पैसा डालने में ये लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी 15 महीने से रिटर्न नहीं है लोगों के। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स शेयर करता हूँ जो मुझे मेरे टीम मेंबर ने शेयर किया हुआ है। यू नो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे हमारे फंड्स के वाईटीडी रिटर्न जैसे लोएस्ट इज बिजनेस साइकिल फंड 12% के आजू बाजू है। बाकी फंड 16 17 18% के 19% के आजू बाजू है। जैसे ऑल वेदर 19% है, डाइवर्सिफाइड 17% होगा, आइस भी कुछ 60 या फिर 18% होगा जो हमने आगे प्रेजेंटेशन में देखा। सो द लोएस्ट इज बिजनेस साइकिल विच इज क्लोज टू 11.5 12% फॉर अप्रैल टू दिसंबर, बराबर है। अभी मैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी रिटर्न्स बोलता हूँ आपको। द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 5.54% का रिटर्न है। लार्ज एंड मिड कैप में 7.6% का रिटर्न है। प्योर मिड कैप में 8.25% का रिटर्न है। प्योर स्मॉल कैप में 4.36% का रिटर्न है। मतलब BSE 500 itself has given a
11-12% रिटर्न, उससे सारी कैटेगरी के रिटर्न्स कम है। एवरेज मैं बोल रहा हूँ, और हमारे सारे फंड्स के रिटर्न ऊपर है। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मार्केट में ऑलरेडी पेन बहुत आ चुका है, 15 महीने से लोगों के पैसे बने नहीं है, बेस इज फेवरेबल, अर्निंग्स का ग्रोथ पिछले मल्टीपल क्वार्टर्स का फेवरेबल है। एफआई 2 साल से कंसिस्टेंट बेच रहा है, लास्ट ईयर वॉज वेरी हैवी। इसमें अगर बजट में थोड़े से अच्छे रिफॉर्म्स आ गए, प्लस अगर ट्रम्प के साथ डील में कुछ हो जाता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छा रनवे फॉर ग्रोथ आ सकता है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से खोने का जगह कम है और कमाने का जगह अच्छा है। और यूजुअली हम लोग वही बोलते हैं जो हमको फील होता है, तो आप प्लीज इसको कंसिडर कीजिए कि ये मेरे मुझे लगता है कि ये गुड टाइम है। Currently, as an investor, what should be our focus area? Strategy in terms of investing, like mid cap, small cap. देखिए सर, डेडिकेटेड स्मॉल कैप मिड कैप वैसा टाइम गया। अभी क्या है ना, पिछले 4 साल में लिक्विडिटी ड्रिवन रैली था, पी मल्टीपल बढ़े, कोविड के बाद सबका पैसा बना, मतलब इट वुड बी रॉन्ग, मोस्टली सबने पैसा बनाया। बट अभी वो जो फैक्टर है ना, वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है। अभी बहुत सिलेक्टिव ऑडियंस पार्टिसिपेट कर रही है, सिलेक्टिव स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। जैसे आपको मैं आप हैरान हो जाओगे सुन के, लेकिन मार्केट में पिछले 9 महीने में जो रैली आई नीचे के, अप्रैल 7 अप्रैल 2025 में, जो निफ्टी इंट्राडे 21,800 टच करके 27,000 सॉरी 26,000 पे आया, वो जो पीरियड में मेजोरिटी मेजोरिटी 3 सेक्टर में पैसा बना, एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एक मेटल और एक ऑटो। बाकी सारे सेक्टर्स आप पकड़ लोगे ना, थोड़ा बहुत ऑफलेट आईटी चला है। बाकी कोई भी सेक्टर देख लो आप, चाहे कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग देख लो, केमिकल देख लो, इंफ्रा देख लो, यू नो डिफेंस देख लो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कंज्यूमर देख लो, एफएमसीजी देख लो, कहीं पे भी पैसा नहीं बना है। सो द मार्केट्स आर सिलेक्टिवली गोइंग वेरी वेरी क्लियरली टुवर्ड्स द विनर्स, जो कम होते जा रहे हैं। तो इसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक और बॉटम अप पिकिंग से ही पैसा बना पाओगे, नॉट इन अ जेनेरिक लैंग्वेज ऑफ कि प्योर मिड कैप में पैसा डाल दो या स्मॉल कैप में डाल लो। आप कहीं पे भी डालो, आपका स्टॉक पिकिंग सही होगा तो ही रिटर्न अच्छे बनेंगे। वो बेस्ट टाइम जो है वो ब्रॉडर मार्केट की बॉयंसी का वो निकल गया है। सो हमारे पास फ्लेक्सी में लार्ज मिड स्मॉल तीनों मिलेगा आपको, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि एग्जैक्टली किधर जाए। तो यू कैन कंसिडर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट? सर, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से 50 लाख है। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपने रिसेंटली गोल्ड एंड सिल्वर में पैसे डाले हैं, कैन आई होल्ड फॉर 2 इयर्स? मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि प्राइस एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन दैट्स अ ग्लोबल फैक्टर विच इज ड्राइविंग। बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिमेन इन्वेस्टेड। Defense sectors, any view? We are structurally very positive because globally defense capex बढ़ रहा है। इंडिया में भी डिफेंस कैपेक्स रीजनेबली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को मिरर करके बढ़ेगा, या तो उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। लोकलाइजेशन का फोकस बढ़ता जा रहा है, और एनी कंट्री ग्लोबली, इफ दे आर नॉट स्ट्रांग इन डिफेंस, वी हैव सीन रिसेंटली विद यूक्रेन or Gaza, or as recent as Venezuela, you will be wiped out from the global map overnight. So the importance of defense has all the way increased substantially. Uh, View on metal and precious metal, I just answered it a couple of minutes ago. I will not be answering a stock specific question, so please excuse me for that. View on gold and silver, we are structurally positive because the globally, if you look at, game is now shifting in the hands of central banks, and slowly and gradually it is going away from the retailers. So the central banks globally have decided to de-risk their allocation away from the dollar, and that theme has just started playing up. So I think this phenomena of reasonably high allocation towards gold by central bank is going to stay here for the long time.
So I think there is no issue for the long-term investors. Most of the fund managers view valuations are above fair value. So going forward, what can we expect return? Sir, मेरे हिसाब से तो valuations are now reasonable. They are not above fair value. एंड जैसे मैंने डिटेल में समझाया FY 27 और 28 के बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स बहुत खराब हो गए, अर्निंग्स बहुत जोर से कटे हैं और उसकी वजह से मार्केट एक्सपेंसिव, ऐसा तो नहीं लग रहा है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडियन मार्केट इज ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड मार्केट, सो फोकसिंग ओनली ऑन इंडिया वी आर मिसिंग 96% मार्केट विच इज परफॉर्मिंग बेटर। एंड फर्दर इंडिया में गेट अफेक्टेड बाय AI, स्पेशली IT सेक्टर। सो पहले तो ये मिथ है कि अपना IT सेक्टर खराब करेगा बिकॉज ऑफ AI, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। अपना AI का अलग रिक्वायरमेंट है, IT सर्विसेज का अलग रिक्वायरमेंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी बॉट मोस्ट ऑफ द IT stocks recently, and we are in the money handsomely. We bought ITBs as well in with a large weights in few of the funds, and we are also in the money. We don't think that IT sector is going to go away in veins because of AI. So that's one thing to clarify. Secondly, इंडिया इज 4% ऑफ मार्केट, तो 96% को हम मिस कर रहे हैं। तो देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, tracking global markets in detail across the geography is impossible for anyone. You can put your funds into international market oriented products as an asset allocation strategy. No denial for that. But at the same time, your statement itself is very, very promising that India is just 4% of the global market. So there is a huge runway for growth as well if we really do very well. So I would take it positively. But yes, you can do the asset allocation. For fresh investments at this stage, will you invest at a one go or into tranches like what you did earlier? सर, ये लेवल पे तो मैं मेजोरिटी 70-80% डाल दूंगा। 10-20-30% अगर होल्ड भी किया तो 25,000 के लेवल के आजू बाजू आता है तो इन्वेस्ट करके खत्म कर दूंगा। आई थिंक आई डोंट हैव टू मच ऑफ वरी बियॉन्ड दैट एज ऑफ नाउ। Any view on pharma and auto sector? Auto obviously is doing very good. We are very, very positive. Have been riding on it in through a few of the stocks. Pharma, I think, is likely to bottom out. So we picked up IT early, and we have been now rewarded by the market. Obviously, we picked almost at the bottom. Similarly, we think that pharma is about to hit the bottom and should start revival in probably 1 or 2 quarters down the line. So, pharma, I'm very optimistic as a sector. When will FI return? I just answered in the beginning. They are waiting for the uncertainty going away related to tariff. They are also waiting for the earnings revival, which is probably likely to come, and they are also closely monitoring the government policies, and the budget would be a nice trigger for that. PSU and defense stocks have gone substantially down. Your views on the same? I think it's a cycle. So market हर तेजी में नया घोड़ा दौड़ता है, जैसे हम बोलते हैं। तो the recent teji, I would say, I would not say teji, but the market has moved up from 21,800 Nifty to 26,000 in last 8 months. If you look at the banking, NBFC, metal and auto has taken up the leadership. So I think the leadership has changed from the previous leader to the new leadership, and I think that should more or less continue. Having said that, I think the PSU and defense
stocks are probably showing a sign of bottoming out. We'll have to look at the numbers. So defense, no denial for the order books and revenue visibility, but it has to execute. They have to execute it and report into numbers, which market is clearly waiting for. And PSUs, I think, have selectively they have started coming up well, especially in the case of PSU banks and also a few of the larger names. But my sense is that the leadership has shifted from the earlier PSU defense to the new sectors. View on refineries, sir, refining margins are going up, but you'll have to see how long we get the cheaper crude oil. Uh, Trump involvement is pretty strong in this sector, directly or indirectly. And also, if they are going to control, let's say, Venezuelan oil and eventually if Iran, then they would be able to decide the price as well. So everyone is expecting the crude prices to go down because of the better supply coming in. But if they decide to, you know, charge higher prices for whatever reason, then the sector would get impacted. As of now, sector is in positive environment because of benign crude oil prices and better cracks and better refining margins. From where government will raise money in the budget, what do you expect from the budget? देखिए सर, बजट में बियॉन्ड अ पॉइंट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट जो ग्रोथ है वो म्यूटेड है, वो म्यूटेड रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल मिरर मोर और लेस नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। दे वुड लाइक टू कंट्रोल द बोरोइंग्स टू कीप द इंटरेस्ट रेट लो। Maybe few of the reforms if they bring related to faster decision making or some support for exports and all, we'll have to see. But मेरे हिसाब से हम एवरी ईयर देखते हैं कि बजट से कोई ज़्यादा मार्केट का मूवमेंट बियॉन्ड अ पॉइंट होता नहीं है। बट अगर ये बजट में उनको जेन्युइनली कुछ करने का स्कोप है तो ये बजट में, बिकॉज external factors are not conducive. Domestically, things are slowly, gradually coming back in shape. So अगर genuinely उनको कुछ भी करना है मेहनत करके, थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट भले बढ़े या फिर वो उसका जो टारगेट है एफआरबीएम का वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट ग्रोथ पे फोकस करे, ज्यादा स्पेंडिंग करे तो मजा आ जाएगा। तो लेट्स सी दैट हाउ द बजट इज गोइंग टू कम अप। What is your view on the export related stocks and Trump trade deal that can play out in short term? Sir, export related stocks may we are going very selective. Uh, we tried with one textile name which we exited as well. So directly impacted कोई भी sectors हम नहीं ले रहे. Obviously, we have a large exposure to IT and pharma, which has no direct impact of tariff unless they put it in, which is probability is very, very, very less. And uh, purely based upon their business metrics and business analysis, we have bought them. Pharma has been a rewarding sector for us. One of the stocks has done very well for us. And same is with IT, but remaining जो डायरेक्टली इम्पेक्ट हुए अभी ट्रम्प टैरिफ की वजह से, उसमें हम अभी भी दूर रह रहे हैं। जब तक टैरिफ की कोई क्लैरिटी नहीं आती है, वी विल नॉट बी एबल टू take exposure into the sectors which are impacted or stocks which are getting impacted because of the Trump tariff. एक क्वेश्चन है, योर फंड परफॉर्म वेल इन वॉलेटाइल मार्केट, व्हाट विल बी इफ द मार्केट रिमेन्स फ्लैट और स्टेबिलिटी कंटिन्यू, will your fund give better return or have ability than regular mutual fund in such scenario? देखिए सर, हमारी हिस्ट्री रही है
कि हमने हर मार्केट में कमाने की कोशिश की है। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये है कि बेंचमार्क के रिटर्न को कंसिस्टेंटली बीट करो, चाहे वो सुपर तेजी का मार्केट हो या सुपर मंदी का मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो। तो जैसे आपने बताया वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन बेसिकली फ्लैट मार्केट है ये। स्लाइट वॉलेटिलिटी है, लेकिन काफी फ्लैट है। अभी 15 महीने 16 महीने से बेंचमार्क का रिटर्न फ्लैट है, जीरो है या माइनस देख 2% है। सो आई थिंक आवर ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, जहाँ पे अर्निंग्स अच्छा है, बिजनेस रिवाइवल है, हम वहाँ पे पोजीशन लेंगे और विल ट्राई टू मेक बेटर डील फॉर आवर क्लाइंट्स। और इन केस हमको लगता है, जैसे हमको सितंबर 24 में लगा आइस फंड लॉन्च किया तब कि मार्केट्स आर रियली लुकिंग वेरी बैड, तो हम बताएंगे और कैश पे भी आ जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ तो यही हमारी फिलोसॉफी है और हम यही कर सकते हैं और करते आए हैं। एक क्वेश्चन है, विल द मिडिल क्लास श्रिंक बिकॉज ऑफ द जॉब लॉसेस ड्यू टू एआई बूम? मेरे हिसाब से इंडिया के केस में उल्टा हो जाएगा। इंडिया के पास जो इतना यूथ है और जो लेबर है ना, तो वी वुड बी एक्सपोर्टिंग लेबर, ब्लू कॉलर जॉब टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कॉस्ट सेंटर, सॉरी मतलब जो स्पेंडिंग वाले सेंटर है, नॉट द कॉस्ट सेंटर, बट जो स्पेंड करते हैं, जैसे यूरोप है, यूएस है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो वो सब कंट्रीज में पॉपुलेशन इज ग्रोथ इज क्वेश्चन मार्क। तो हमारा मिडिल क्लास श्रिंक होने का तो सवाल ही नहीं है। इंडिया में एंटरप्रेन्योर स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा है, प्लस हमारे कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ है लाइक फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस विच ड्राइव्स द इकोनॉमी। एंड अगर एआई रिलेटेड जॉब लॉसेस का बात है, तो इंडिया में ऑटोमेशन का अडॉप्शन अभी इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है, और अगर होता भी है तो सिलेक्टिव सेक्टर्स में होगा। और कुछ जॉब लॉसेस होगी, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स का चांसेस है। आईटी सेक्टर्स में जॉब लॉसेस काफ़ी हो सकते हैं अगर एआई का स्ट्रांग एडॉप्शन हुआ तो। सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग में है, बट मोर और लेस उसके सामने अपॉर्चुनिटी दूसरी बहुत बड़ी ओपन हो सकती है, इंक्लूडिंग ग्लोबल लेबर रिक्वायरमेंट्स। सो मेरे हिसाब से तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और इंडिया का लेबर मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक होने की जगह पे जोर से बढ़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। एक क्वेश्चन है, डू यू सी इन्फ्लेशन किकिंग इन विद द कंजम्पशन पिकिंग अप, यूजफुल फॉर डबल डिजिट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट? इनफैक्ट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी थोड़ा इन्फ्लेशन चाहती है। दे हैव डन ओएमओ एंड लार्ज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, और आई थिंक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज उससे है ना आपका इकोनॉमी में अर्निंग ग्रोथ और जोर से आएगा। क्योंकि वन ऑफ द रीजन फॉर सबड्यूड अर्निंग ग्रोथ इज अ वेरी वेरी लो इन्फ्लेशन और नो इन्फ्लेशन। सो रियलाइजेशन पर पीस अगर इंप्रूव होता है, तो आप अगर 10 से 11 पीस बनाते हो तो 10% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। बट वो 10 से 11 पीस जो है वो पहला, द लास्ट ईयर जो 10 पीस बनाते थे वो 9 रुपए का था, और ये साल जो 10 11 पीस बना रहे हो वो 10 रुपए का है, तो आपका रियलाइजेशन पर पीस along with volume growth is going to drive the top line एंड द बॉटम लाइन। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी आना चाहिए, एंड आए तो अच्छा है। डू यू सी मिड एंड स्मॉल कैप विच इज नॉट परफॉर्मिंग सिंस मैनी डेज, डू यू सी बॉटम फॉर्मिंग इन इट? आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक जाइए सर, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेक्टर और एज अ सेगमेंट की लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप बॉटम आउट हो गया, ऐसा मत देखिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि मिड कैप में ही कोई कंपनी और सेक्टर जबरदस्त परफॉर्म कर जाए, और कोई कंपनी और सेक्टर बिल्कुल भी परफॉर्म ना करे। सेम इज विद स्मॉल कैप। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में काफी स्मॉल कैप्स है, देव डन वेरी वेल डिस्पाइट ऑफ द कार्नेज इन द स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स नाउ, इंस्टेड ऑफ जस्ट अ जेनेरिक स्टेटमेंट ऑफ दैट कि मिड कैप अच्छा करेगा या स्मॉल कैप अच्छा करेगा। With China coming in transmission power, India GVT
So the question is, so I can understand the question. What question is that government has probably allowed Chinese company to take part in a transmission project, which may impact the domestic companies. सो इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है. देर इज नो ऑफिशियल गैजेट अनाउंसमेंट. एंड आएगा तो भी सिलेक्टिव पॉकेट्स में प्रोबेबली आ सकता है जहाँ पे फास्टर एग्जीक्यूशन करना है और कॉस्ट कंट्रोल करना है. इट विल नॉट बी ब्रॉड बेस्ड ऑल अक्रॉस, but we'll have to see. And if the China comes in a full fledged, yes, the impact would be there for the domestic player for sure. There is one interesting question that, as per your presentation, we as investor feel markets ahead are going to be bit choppy. Can we withdraw 25% of our fund and invest in other avenues like real estate, which give a guaranteed return about 21%? Sir, please मुझे भी बताइएगा. If there is anything called guaranteed return, and that too in real estate, both asset classes are different. You have to look at your asset allocation. You have to look at your exposure, and goal path. मेरे प्रेजेंटेशन से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट चॉपी लगता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे बहुत क्लियरिटी के साथ मैं बोलता हूँ कि 25,000 के नीचे नहीं जाएगा एंड ऊपर में 28-29 हज़ार हो सकता है. FIs have been very short, and government is in slowly and gradually coming up in a reform side, and budget is just on the head. Let's wait for that. And if the deals are smoothly done, then probability is that the market may rather run up much faster than anybody would have thought of. So, and anyways, the 15 months returns are not there. So that's what my summary is not there. So I don't think that this is the right assessment. Regarding real estate, it's your independent choice. You can consider it. If you don't have enough asset allocation to that part, you can consider if you have a guaranteed return. Is AI going to affect the software industry all over the world? नहीं. मुझे नहीं लगता है कि सॉफ्टवेयर को इम्पैक्ट आएगा. मुझे लगता है कि इट विल बोथ विल को एग्जिस्ट एंड सॉफ्टवेयर विल कीप ऑन डूइंग इट्स जॉब. ओनली थिंग इज दैट कि आपके जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स थे वो कम हो जाएंगे, बट द परफॉर्मेंस विल स्टिल गोइंग ऑन. बाकी आई थिंक मैंने बताया ऑटो एंड आईटी पे व्यू. आई विल ऑल्सो मेंशन अबाउट दैट. Any impact on the market if the US Fed rate are cut? I think it's discounted by the market. Certain rate cuts are coming for sure. Even President Trump wants it badly because their interest cost is way too high and they want to control the interest cost, because their debt is, I think, 38-40 trillion dollar. So slightest of the reduction in interest cost is good for them. What is your outlook on the market for? Just a minute. What is your view on the new age tech companies? Very selectively, we are positive. Not that anything and everything we like. Nothing is coming very cheap. So most of the IPOs are coming very expensive. So we are very selective in our approach. Which sector do you think will do well in a year? Sir, I think auto, banks, NBFCs, and metal, which have been doing well, should probably continue to do well. Cement is another sector which is likely to turn around and do well. Um, Pharma is another sector which is most probably likely to do the turnaround and do well. So these are the prominent sectors and names uh, there. Chemical will probably have a mix. Few of the names have already started delivering. It all depends upon how China is going to behave. If the China is not going to ramp up the supply and the focus is on the better realization, then this sector would be a big, big dark horse. Yeah, so these are the sectors.
What is your outlook on the market for the next 1 year, which I mentioned? Also, from the long-term perspective, do you believe it is realistically possible to generate 20% CAGR returns over a 10-year investment horizon? So this return is a outcome of the end markets and dynamics. But if you look at अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अभी जो 8% पे वो 11 12 10 11% पे आ जाता है ना, तो कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ भी 12 13% पे आ जाएगा, तो पोर्टफोलियो लेवल पे मतलब आप 14% 15% रिटर्न कंफर्टेबली ला सकते हो। उसमें स्मार्ट एंगेजमेंट करके बेटर विनर्स आइडेंटिफाई करके आप 2 3% और रिटर्न ला सकते हो। So this is the standard journey for any fund manager over the period of last 15 20 years यही होता हो रहा आ रहा है और आने वाले सालों में भी यही होगा। ऑल बॉइल्स डाउन टू द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट ही 6% पे है और कॉर्पोरेट अर्निंग का ग्रोथ रेट ही 9% पे है, तो आपका सारे ग्रोथ के नंबर्स कटते जाएंगे। एंड एनीबडी हु इज सजेस्टिंग कि मैं 20 22% सीएजीआर बनाऊंगा, तो आई वुड बी नॉट ऑफ दैट कैम्प। We will try our best that we generate return far higher than market returns net of fees and charges, और ये हमारा एंडेवर है, हम करते रहेंगे। वी हैव बीन डूइंग सक्सेसफुली, लाइक 18 19% रिटर्न्स आए हैं, लेकिन विल हैव टू सी द अल्टीमेट अंडरलाइंग एजम्पशन है वो ही स्ट्रांग नहीं है तो नहीं होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जहां तक मेरा मानना है, इंडिया का ग्रोथ रेट 7 8% नॉमिनल जीडीपी तो आता रहेगा। वी हैव टू गो फॉर डबल डिजिट, एटलीस्ट 10% भी आ गया ना, तो इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स फॉर एवरीबडी। One who wants to invest in this market, which fund select from the all the four? See, all four are good for everyone, because you get a different thought process oriented. All weather is relatively conservative, has exposure to precious metal. Diversified is just pure domestic fund. Business cycle is aggressive product, anticipating the cycle ahead of the time and then taking the position. And IC is all about structural investment, consumption, and export oriented. So you can have four of them all together. But if you have to select just two, then probably anything from all weather and diversified one product, and anything from business cycle and ICE one product. That's a combination right now to go ahead with. I'm just trying to read the if I have missed any questions. Short term view on, is it worth to invest in gold and silver at these levels for 2 3 years? देखिए सर, मेरे हिसाब से है ना, इसको 2 3 साल के एंगल से मत देखिए। ये जो थीम है ना, वो आपका एक डॉलर सब्स्टिट्यूट का थीम है। एक 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 पॉलिसी मेकिंग जो ग्लोबली शिफ्ट हो रही है, दैट ओके, हमारा यूएस ट्रेजरी में पैसा था, अभी हमको गोल्ड में भी रखना है, सेंट्रल बैंक्स ने डिसाइड किया है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, दैट इज नॉट फॉर 1 or 2 year, दैट इज फॉर डिकेड्स। एंड वो जब चेंज होता है, वो टिका रहता है और उसमें रेदर इंक्रीमेंट होता है, कभी गिरता नहीं है। सो एज लॉन्ग एज द यूएस एम्पायर इज in debt. So debt is very high. We all know that it is now global market cap का 6 70% market cap US का है। ग्लोबल जीडीपी का प्रॉब्ली 28 30% यूएस का कंट्रीब्यूशन है। डेट लेवल इज 38 40 ट्रिलियन डॉलर। सो और जिस हिसाब से अभी जो यूएस की थॉट प्रोसेस है, दैट इट इज दैट कंट्री इज ऑफ नो बडी, उसके अलाइज का भी नहीं है, उसके पार्टनर्स का भी नहीं है, उसके दुश्मन का भी नहीं है। इट इज सो अनप्रडिक्टेबल। सो एज लॉन्ग एज दिस uncertainty is there, there will be incrementally more and more focus towards non-dollar exposure. And there is, very frankly, there is no substitute available. Earlier, people used to park funds into Swiss franc or euro or Japanese yen and so forth.
But there also you have a now a very limited options available, and you don't want to go overboard like that. So it is always better to park other than these currencies, and obvious choice left is precious metals, obviously gold. Silver has, as I said, its own dynamics, and demand is higher than supply. Supply cannot be ramped up overnight. Unless and until there is a substitute product available, you can't replace silver. Substitute itself is rather increasing, including copper. So these things are not for short term व्यू. So 2-3 years मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म हो जाएगा. इसके लिए आपको थोड़ा सा मल्टी ईयर व्यू लेके बैठना चाहिए. मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश कुछ गोल्ड सिल्वर लेना है ना, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बाइंग यू बाय मल्टी एसेट फंड जिसमें प्रीशियस मेटल भी है, इक्विटी भी है, डेट भी है. दैट वुड बी स्टिल लो रिस्क प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेन वैनिला एग्रेसिव एक्शन ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर. We are not negative, but since you're buying, proposing to buy at the higher level, this is the piece of advice I can give. Yeah, I think I have exhausted and I have completed most of the questions. Uh, Maybe let, we can conclude the session because there are no more fresh question being raised. Okay. So with that note, we will conclude this session. Thank you everyone for joining. You may exit from the call now. Thank you.